Gehlot in Rajasthan's refreshed cabinet. Sachin Pilot says he's satisfied, says no more factions in the party. Farmers to continue with their plan to march to Parliament on the 29th of November, demanding an MSP committee, an electricity bill 2020, the withdrawal of cases against protesting farmers and the sacking of the Minister Ajay Mishra over the Lakhimpur Kheri mowing down of farmers' violence. A cabinet meet on repealing the farm laws to approve a bill to repeal the farm laws expected this week. In Haridwar, Arvind Kejriwal says both the Congress and the BJP have done nothing for the hill state, promises that the Aam Aadmi Party will build schools and hospitals. The Defence Minister commissions the INS Vishakhapatnam into the Indian Navy in Mumbai, and the Navy gets a Made in India stealth-guided missile destroyer. All Delhi schools are to remain shut until further notice due to the city's high air pollution levels. The Directorate of Education orders as the national capital continues to experience poor air quality. And actor Nawazuddin Siddiqui is nominated at the International Emmy Awards in the Best Actor category for his film Serious Men. He speaks to NDTV ahead of the awards. Hello and welcome. You're watching the news at 8 this Sunday evening. I'm Sarah Jacob. Let's get to you the big stories of the day. Ashok Gehlot's new look cabinet was revealed today with 15 new faces. 5 Sachin Pilot loyalists are among the 30. They are among these state ministers as this big revamp aims to put to end the differences. Differences really that became a public spectacle last year. They hope to put to rest and put to end these differences. In a balancing act, the chief minister told party workers at a meeting that the contribution to the governance of those who could not be inducted in the cabinet is no less than those who have been made ministers today. ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिबेंड देने का। अच्छे ढंग से हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। फर्स्ट टाइम वाले फॉर्मूला लगा कि हमारे खाली फर्स्ट टाइम वाले MLA हैं, तो पहली बार के फॉर्मूले से संभव नहीं हुआ कि हम सब जगह बना सके सब जिलों के अंदर, पर हम लोगों ने भी सोचा कि अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो गई हमारी। उसी रूप में हम सबसे बात करेंगे, नए रूप में आप देखेंगे पूरी कैबिनेट को, और मैं समझता हूँ कि जनता की आशा अपेक्षाएं जो है सरकार से उसको पूरा करके हम दिखाएंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा आला कमान को, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मौका दिया है और जो मौका दिया है उस पर खरा साबित होकर दिखाएंगे और प्रदेश की आम जन की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनमें भागीदार बनेंगे, उनको मजबूती से उनका सोल्यूशन कराएंगे। जो निर्णय लिया है रिसफल में, तो पहले बात थी कि भाई समग्र राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो इस बार मिला है। पूरी राजस्थान की हमारी मांग थी और SC ST के लोगों की भी मांग थी, उसको पूरा किया है। तो एक सफल रिसफल हुआ है और इससे कांग्रेस मजबूत होगी, जनता में एक अच्छा मैसेज आएगा। And before the oath ceremony, in an interview to NDTV, Sachin Pilot says that he's satisfied that there are no factions in the party any longer. पांडव को 5 गांव मिल गया, तो क्या अब महाभारत आगे नहीं होगी? महाभारत होगी 2023 में कांग्रेस और बीजेपी की, पांडव और कौरवों की, और उस समय जीतेगी कांग्रेस और पांडव। और हमारा सबका ध्येय यही है कि 23 में हम लोग दोबारा सरकार बनाएं। उसके चलते कुछ चेंजेस सरकार में भी हुए हैं, कुछ संगठन में भी होंगे, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने सबसे चर्चा करने के बाद एक बहुत व्यापक फेरबदल करने का निर्णय लिया है, जिसका हम सबने स्वागत किया है। आने वाले समय में हम लोग कैसे चुनाव दोबारा जीतें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, पिछले 30 साल से चल रहा है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ अलग करें,
उस वर्ग को जोड़ें जो हमसे अपेक्षा रखता है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और मुझे लगता है कि अब जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें समुचित रिप्रेजेंटेशन मिला है। 4 दलित हमारे मंत्री बने हैं पहली बार राजस्थान में, तो एक अच्छा संकेत गया और हम सबकी कोशिश यही है कि मिलकर चुनाव लड़ें और अगले बार चुनाव जीत सके। देखिए, सरकार में आपके लोग पहले भी थे, आप खुद उप मुख्यमंत्री थे, आप पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हुई और आपने खुद आपकी तरफ से, आपके समर्थकों की तरफ से आरोप लगाया गया कि काम नहीं करने दिया जा रहा सरकार में रहते हुए भी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति अब पैदा नहीं होगी? इस तरह का पहली बात तो कोई किसी का समर्थक नहीं है, सब विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के ही विचारधारा से चुनाव लड़ते जीतते आए हैं। तो ये मीडिया में आंकड़े गिनाए जाते हैं, कौन किसका समर्थक, कितने गुट किसका क्या है। हम सब नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है, अलकमान सोनिया जी का है, राहुल जी का है, उसके संरक्षण में काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बात रखने का हमको अधिकार है और कांग्रेस में ये खुलापन है, अपनी बात रख सकते हैं, संवाद हो सकता है, जो फीडबैक है हम देते रहते हैं। और मुझसे नहीं, सब नेताओं से बात करने के बाद, सबका फीडबैक लेने के बाद निर्णय लिए गए हैं, जिसका सभी ने स्वागत किया है और एक अच्छा सकारात्मक कदम मैं समझता हूँ इस मंत्रिमंडल विस्तार से निकल कर आया। And the other big story of the day, farmers at the Delhi borders have said that their protests will continue till the formal cancellation of the 3 contentious farm laws which Prime Minister Modi announced on Friday. They've also demanded a law on minimum support prices, a withdrawal of the police cases filed against many of them over the last year. The official withdrawal of the laws will take place only, or can take place only, when Parliament's winter session begins, which is at the end of this month. The cabinet approval for the withdrawal of the laws is expected sometime this week. The winter session begins on the 29th of November, during which the bill for the repealing of the laws could be passed, say sources. What's the next move? Farmers today met as the Samyukt Kisan Morcha to discuss their course of action after the Prime Minister's announcement that the 3 farm laws would be repealed. एक मुद्दा हट जाएगा कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पहल करिए कि 3 कानून हम वापसी ले रहे हैं, तो हट जाएगा। दूसरे मुद्दे अभी हैं। प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगे बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। Farmers who have been sitting at Singhu on the Delhi-Haryana border in a relay protest for the past 12 months say they won't return to their villages just yet. 68-year-old Gyandas Singh, who belongs to Sangrur, has been protesting for the past 1 year. He says he is waiting for a word from his leaders, but he is not the only one. जब तक हमारे जो नेता हैं, हमारे लीडर हैं, किसान लीडर, जब तक संतुष्ट नहीं होते, हम जहीं बैठेंगे उनका हुक्म मानेंगे। जहाँ नहीं, अभी नहीं जाएंगे। पता है क्या, प्राइम मिनिस्टर ने अभी बोला है, अभी ऐलान हुआ है, लेकिन हमको लिखती रूप में कुछ नहीं दिया। Meanwhile, sources indicate that the cabinet will approve the repeal of the 3 farm laws at a meeting on the 24th of November. Protesting farmers here at the Singhu border say that the Prime Minister's verbal announcement is just not enough. They want all their demands to be met on written assurance and that they will continue with their agitation till such time it is met. With Sanjay Kaushik, Shunakshi Chakravarti for NDTV. And the INS Vishakhapatnam, the first ship of the P-15B class of guided missile stealth destroyers, was commissioned into the Indian Navy this morning by the Defence Minister. The 164-metre-long ship is one of the largest surface combat ships to be built in India by the Mazgaon Docks Limited in Mumbai. 3 more such ships are going to be built for the Navy, and the Defence Minister used the occasion to call out China. कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नए पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं. Defence Minister Rajnath Singh on Sunday calling out China for coming up with wrong definitions of the UN Convention on the Law of the Sea.
Rajnath Singh, speaking at the commissioning of INS Vishakhapatnam, the Made in India stealth guided missile destroyer, also highlighted India's growing naval influence. We started our trials in March this year, and we have come a long way since then. We improved our onboard machinery, various auxiliaries, our weapon systems, our guns are fired, our torpedoes are fired, our sensors have been improved, and we have come a long way today. The ship's advanced fighting power gives it an edge and bolsters the Navy's capabilities. It carries BrahMos surface-to-surface missiles, Barak 8 surface-to-air missile, and of course anti-submarine torpedoes, along with other advanced weapons and firepower. And with the indigenous aircraft carrier INS Vikrant to be commissioned soon, India's reach and influence will be enhanced. यह कैरियर हमारी रीच इंडियन ओशन से बढ़ाकर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन तक कर देगा। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग न केवल नेवी के लिए बल्कि इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में भी एक गोल्डन मोमेंट होगा। Currently, the Indian Navy has 41 ships under construction, of which 39 are being built in India. The fourth indigenous Scorpion-class submarine INS Vela is being commissioned in the coming week. And after INS Vishakhapatnam, there are 3 more such ships in the pipeline. This is the INS Vishakhapatnam, a stealth-guided missile destroyer which is the first of its class of ships. Now if you compare it to the Kolkata class of destroyers, then not only has this ship been upgraded in terms of its stealth capabilities, but it has received massive upgrades also in terms of the fight capabilities. In Mumbai, with camera person Praveen Ji Rohit on the INS Vishakhapatnam, Saurabh Gupta, NDTV. And the Aam Aadmi Party has stepped up its poll campaign in Uttarakhand with its chief Arvind Kejriwal saying that the BJP and the Congress have done nothing for the state. It's time to give the AAP a chance. आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया? देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता, ये बस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो कह रही है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके स्कूल बनवाएंगे, हमें वोट दोगे तो हम आपके अस्पताल बनवाएंगे। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। And all Delhi schools are to remain shut until further notice due to the city's high air pollution levels. That's what the Directorate of Education ordered today. This is the National Capital Region continues to experience aggressively poor air quality this season, and during this time only online classes will run. But not everybody has the ability to stay home and be less exposed. Here's a report on just one of the many groups of people who have no choice as they have to earn a living. In Delhi's very poor air quality, the government has advised people to avoid exercise. But there are hundreds of thousands in the city who have no choice. 45-year-old Amar Suttu has worked as a rickshaw puller in Delhi for 3 years. He sends money to his wife and daughter in Malda, West Bengal. Not working even for a day is unthinkable for him, despite the threat to his health. क्या करूं, मजबूरी में रिक्शा चलाता हूं, खाने का पैसा नहीं है, 50 रुपए किराया देना पड़ती है, 100-150 रुपए बचते हैं, क्या करूं इसमें से, बीवी बच्चा घर पे भूखा मरती है। Anshuman Haldar has lived in Delhi for 17 years. After years of doing odd jobs, he began pulling a rickshaw. आंखों में जलन होता है, 11-12 बजे से 12 बजे भी शुरू होता है, कभी 1 बजे भी होता है, लेकिन रहता है 3-4 घंटा रहता है कम से कम। टाइम डर करके क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास दवाई लेता हूं, काम करता हूं, आराम मिलता है, बस ऐसी।
Like most rickshaw pullers, he works 12 hours a day to scrape together just 300 rupees. Doing hard manual labor in Delhi's toxic air can have a grave impact on even the healthiest people. But rickshaw pullers don't have a choice. If they miss even a day of work, their families won't be able to stay afloat. With Mohammad Mursaleen, Meher Pandey for NDTV.